औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स। तो इंग्लिश में जो हम लेसन पढ़ रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। कल हमने यहाँ तक एंड किया था। आज हम पेज नंबर 105 के नीचे से शुरू से करेंगे। तो आप अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 105 पर जाइए। तो लेट्स स्टार्ट। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by then, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly, he heard a voice crying out, "Quickly, quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewelry, jewels, and his horse. Hurry, or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird in the tree under which he was sitting. He also heard faint noises emanating out from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. The king was amazed to hear a similar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. The rishi will back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. The one looked like the other bird outside the cave. He said to himself aloud, "You are right, sir. Answered the bird. He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks about as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. "Welcome, sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest a while, then you can share my food." The king told the rishi the story of the two birds, how each had behaved so differently, though they looked so alike. "The forest is full of surprises," he said. The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company he keeps. The bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one," he repeated, "what he was always heard. He welcomed people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds." तो ये था आज हमने ये एंड की ये लेसन। कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अब मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ आपको। तो क्या होता है जब ये बादशाह जो है ये हिरन के पीछे पीछे दौड़ता है घोड़े पर, ये जंगल के दूसरे साइड में पहुंच जाता है। इसको बहुत देर लगती है होती है, तो ये थक जाता है। तो ये क्या देखता है कि एक जगह ये रुक जाता है। तो वहाँ पर पेड़ होता है, पेड़ के साथ ही एक गुफा होती है। ये वहाँ पर घोड़े को बांधता है और आराम करने के लिए बैठ जाता है। तो अचानक ये आवाज़ सुनता है कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, कोई आ रहा है, कोई
बाहर हैं, आओ इस जल्दी इसके ये सारे जेवरात और घोड़े ले लें, नहीं तो ये भाग जाएगा। तो बादशाह जब ये देखता है वो हैरान हो जाता है, वो देखता है एक ब्राउन बर्ड ऊपर बातें कर रहा है और धीमी धीमी आवाज़ें गुफा से भी आ रही हैं। वो जल्दी जल्दी वहाँ से उठता है और अपने घोड़े पर बैठकर जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो फिर क्या होता है, वो चलते चलते दूसरी जगह पहुंच जाता है। वहाँ पर वो एक आश्रम होता है और पेड़ भी होता है। वो पेड़ के नीचे अपने घोड़े को बांध कर थक गया होता है, आराम करने के लिए बैठ जाता है। तो वो आवाज़ सुनता है, आपका खुशामदीद है, आ जाओ, आप अंदर आइए, अभी ऋषि आ रहा होगा, आप अंदर आके आराम कीजिए, आप थके होंगे। वहाँ पर एक मटका है, उसमें पानी है, आप पीजिए और आराम कीजिए। तो वो हैरान हो जाता है जब ऊपर देखता है कि वैसा ही एक बर्ड है, तो बातें अलग अलग कर रहे हैं। तो वो तब तक ऋषि आ जाता है और ऋषि उसको कहता है आइए अंदर आइए। तो बोलता है कि बादशाह उसको बोलता है ये दो बर्ड्स ऐसे सेम हैं और ये बातें अलग अलग कर रहे हैं, तो क्या इसका क्या माजरा है। तो इसको कहता है कि पहले बर्ड इसको बोलता है कि आप ठीक बोल सोच रहे हो, वो जो मेरा भाई है वो चोरों की संगत में पड़ गया है, वो इसलिए उनकी बातें बोलता है और वो मेरे साथ अब बात भी नहीं करता है। तो ऋषि उसको बोलता है बादशाह को कि आइए आप मेरे साथ अंदर आइए, आप थके होंगे, आप थोड़ा आराम कीजिए और पानी पीजिए, फिर आप मेरे साथ खाना खाएंगे। तो बात वो ऋषि उसको बोलता है कि ये दोनों बर्ड्स जो है ये बिहेव अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग संगत में पले हुए हैं। तो क्योंकि ये किसी को हम उसके कंपनी कंपनी मतलब उसके दोस्तों से जान सकते हैं। तो वो चोरों के साथ बैठा उठता बैठता है, इसलिए वो चोरों की बातें करता है। ये हमारे साथ उठता बैठता है, ये हमारी बातें करता है। तो ये जो जंगल है ये सरप्राइजेस से भरा हुआ है। आप आइए आराम कीजिए, अंदर आइए, मैं आपको और भी कुछ इस जंगल इन बर्ड्स के बारे में बता देता हूँ। तो आज हमने ये लेसन एंड की। इसके कुछ न्यू वर्ड्स भी हैं जैसे केव है, गैंग है, ऋषि है, आश्रम है, इमेज है। तो ये जो है ये आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह रहमान कल इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।